Good afternoon, students. Today we will discuss about price effect, income effect, and substitution effect, and how we will merge these three effects together. Clear? So before explaining this, let us make this particular concept clear. Suppose this is the budget line in indifference curve analysis. ठीक है? तो ये अगर बजट लाइन है तो इस साइड में हम लोग गुड एक्स मेजर कर रहे हैं और इस साइड में गुड वाई. Now, if price of commodity X falls and price of Y and income remains same, then your budget line will rotate from this side to this. ठीक है, rotate होगा. तो since price of Y is constant, so this particular point will remain constant, and since price of X decreases, your demand for X will increase and you will consume more of X commodity. So your demand of X is increasing. Clear? Now, if the opposite happens, ठीक है, opposite में क्या होगा कि ये अगर budget line है और price of X and income remains same and price of Y decreases. So if price of Y decreases, then demand for Y will increase, and if demand for Y increases, this particular point will remain constant and this side your budget line will rotate. Y का consumption बढ़ जाएगा. और एक और चीज़, बजट लाइन में अगर तुम लोगों का इनकम बढ़ गया, कंज्यूमर का इनकम अगर सपोज बढ़ गया एंड प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई रिमेनिंग कंस्टेंट, देन if your income increases, then initially if this is the budget line, then with the increase in income we can purchase more of X and Y, and in such a situation your budget line will shift rightward from this to this. तो तीन चीज़ हो सकता है, अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हो गया और प्राइस ऑफ वाई और इनकम अगर कांस्टेंट है, देन योर बजट लाइन विल रोटेट लाइक दिस इन द डायरेक्शन वेयर योर एक्स इज मेजर्ड. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स एंड इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ वाई इज डिक्रीजिंग. तो जिस साइड में वाई मेजर होगा उस साइड से तुम लोगों का बजट लाइन रोटेट होगा. ठीक है, और प्राइस ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेयर योर गुड एक्स इज बीइंग मेजर्ड, दैट साइड विल रिमेन फिक्स्ड. And if your income increases, then your budget line will rotate rightward, and if your income decreases, then it will shift leftward. Sorry, this is shifting and these are known as rotation. So now let us first explain price effect. अब देखो, प्राइस इफेक्ट में इस साइड में मैंने x मेजर किया और इस साइड में y. सो सपोज इनिशियली दिस इज योर बजट लाइन, where suppose this is the budget line PL and this is the indifference curve IC. So we know that the point of tangency of the indifference curve and budget line is our equilibrium point. So this is our equilibrium point where the consumer is consuming this much amount of X and this much amount of Y. Now, when we will discuss about price effect, याद रखना कि price change होगा. तो suppose price of X is decreasing and price of Y and income remaining same, that is constant. So if these two variables remain constant, then if your price of X decreases, obviously you will demand more of X, and as a result your budget line will rotate rightward in the direction where your good X is being measured. So your budget line will rotate like this from PL, now it is PL1. Clear? Now when you will demand more of X and you will consume X commodity more, which automatically implies that your satisfaction level will increase. And if your satisfaction level increases, then you will move towards higher indifference curve. From IC, now it will become IC1. Suppose like this. Okay? So this is the new equilibrium point E1. Again, where the consumer is consuming this much amount of good X and this much amount of good Y. Now again, if price of X still decreases and price of Y and income remaining same, then your demand for X will again increase
and as a result your budget line will again rotate from PL1, now it is PL2. So when you will demand again more of X commodity, then what will happen? Your satisfaction level will increase, and as a result you will move to a higher indifference curve. So from IC1 it will now become IC2. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग एक्स कमोडिटी अभी ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं. क्यों ज़्यादा कर रहे हैं? बिकॉज प्राइस ऑफ एक्स इज डिक्रीज्ड. और किसी कमोडिटी का प्राइस अगर कम होता है देन डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीजेस. So this is the new equilibrium point where the consumer is consuming this much amount of good X and this much amount of good Y. Now, shifting from this point to this is nothing but price effect. Similarly, shifting from this point to this is price effect. ठीक है? तो बेसिकली एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट में जब भी हम लोग मूव करते हैं, और कब मूव करेंगे? जब एक कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वैसे सिचुएशन में जब हम लोगों को इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिलेगा और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लोग मूव करेंगे, देन दिस इज नोन एज प्राइस इफेक्ट. सो बेसिकली मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट to this is known as price effect. Again, moving from this to this is known as price effect. ठीक है? Now, by joining all these equilibrium points, we will get a curve, and that curve is known as price consumption curve. Clear? So, by joining all the equilibrium points or by joining all the tangency points of the budget line and indifference curve, we will get another curve, and that curve is known as प्राइस कंजम्पशन कर्व. तो याद रखना प्राइस इफेक्ट के साथ प्राइस कंजम्पशन कर्व इज रिलेटेड. प्राइस द चेंज इज प्राइस इफेक्ट एंड प्राइस कंजम्पशन कर्व. दिस इज ऑल अबाउट प्राइस इफेक्ट. नाउ इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे क्या चेंज होगा? इनकम चेंज होगा. तो सपोज इनिशियली वी हैव ड्रॉन आवर बजट लाइन लाइक दिस, सपोज PL, and we have drawn our indifference curve like this, IC. So this is the point of equilibrium E, where the consumer is consuming this much amount of good Y and this much amount of good X. ठीक है? Now, if income of the consumer increases, why income has increased? हम लोग इनकम को क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम लोग इनकम इफेक्ट दिखा रहे हैं. तो अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज होता है, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई रिमेनिंग सेम, दैट इज कांस्टेंट, then your budget line will shift from PL, it will shift to P1 L1. Now when income increases, the consumer will consume more of both the commodities X and Y. ठीक है? तो दोनों कमोडिटी अगर ज़्यादा आप लोग कंजम्पशन करोगे, बीइंग ए कंज्यूमर, योर सेटिस्फेक्शन लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज, and if your satisfaction level increases, then your indifference curve will shift towards right. From IC, now it will become IC1, where this is the new equilibrium point E1, and the consumer is consuming more of both the commodities. See, more of both the commodities. ठीक है? Again, suppose, again if the income of the consumer increases and price of X and price of Y are still the same, then what will happen? Again your budget line will shift towards right. From P1 L1 it will now again shift to P2 L2. So when your income will increase, you will consume, being a consumer, you will consume more of both the commodities X and Y, and as a result you will have more satisfaction and you will move to higher indifference curve IC2, E2, where the consumer is consuming this much amount of Y and this much amount of X, that is more of both the commodities. Now see, shifting from this equilibrium point to this is nothing but income effect. That is, shifting from this to this or this to this are known as income effect. So basically, एक equilibrium point से दूसरे equilibrium point में move करना
इसको ही इनकम इफेक्ट बोलते हैं। और इनकम इफेक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकम चेंज हो रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूवमेंट को हम लोग प्राइस इफेक्ट क्यों बोले थे? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑफ वन ऑफ द कमोडिटी हैज डिक्रीज्ड, दैट इज वाई। सो प्राइस चेंज होने की वजह से जब इक्विलिब्रियम मूवमेंट होगा उसको प्राइस इफेक्ट बोलेंगे, और इनकम चेंज होने की वजह से जब इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव होगा उसको बोलेंगे इनकम इफेक्ट। क्लियर? So, shifting from this point to this is known as income effect. Again, shifting from this to this is income effect. Now, by joining all these equilibrium points, we will get a curve, and that curve is known as income consumption curve. So, प्राइस इफेक्ट में इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हम लोगों को कर्व मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस इफेक्ट के साथ प्राइस कंजम्पशन कर्व। इनकम इफेक्ट के साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कर्व हम लोगों को मिलेगा उसको बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। क्लियर? नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, थोड़ा टेक्निकल है और तीनों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में जो हम लोग करेंगे वो तीनों का मिक्सचर होगा। ठीक है? सो इन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वी विल ड्रॉ our budget line like this, PL, and we will draw the indifference curve like this, IC. So this is the point of equilibrium, which is E, where the consumer is consuming this much amount of Y and this much amount of X. Now, see, क्या हुआ? Suppose price of X commodity has decreased and price of Y and income remaining constant. तब क्या होगा? We will shift to, sorry, the budget line will rotate from PL to PL1. क्यों रोटेट हुआ X की तरफ? क्योंकि X कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, और ये अगर कम होता है then demand for X will increase, and if demand for X increases then our budget line will rotate from PL to PL1. अभी मुझे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना है। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं दिखाते तब ये प्राइस इफेक्ट हो जाता, क्योंकि प्राइस इफेक्ट में यहाँ से यहाँ पे हम लोग चेंज करते थे और बजट इंडिफरेंस का इधर ही ड्रॉ कर लिए थे। देखो, इधर से इधर शिफ्ट किया और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दिया, लेकिन अभी मुझे प्राइस इफेक्ट नहीं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना है। So if this is the budget line and this is the indifference curve, and if price of X commodity decreases and price of Y and income remaining constant, then demand for X will increase, and as a result your budget line will rotate from PL to PL1. Now, in order to show the substitution effect, ये जो कंसेप्ट है ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला, दिस वाज गिवन बाय हिक्स। तो हिक्स ने क्या बोला? अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाने के लिए कंज्यूमर का जितना इनकम है उससे उसका थोड़ा सा इनकम हम लोग ले लेंगे। तो सपोज उसका इनकम 50,000 है, तो 50,000 से मैंने अगर उससे 10,000 ले लिया, मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना, और कैसे दिखाऊंगी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो 50,000 इज द ओरिजिनल इनकम, जिससे मैंने 10,000 ले लिया बीइंग ए प्रोड्यूसर। तो उसके पास कितना बचा? अभी 40,000। तो अब वो 40,000 से एक्स और वाई दोनों लेगा, पर अभी ज़्यादा कौन सा लेगा? क्यों? Since the price of X commodity has decreased, he will demand more of X commodity, and compared to X commodity वो अभी Y commodity थोड़ा कम लेगा। देखो, प्राइस ऑफ Y इज स्टिल कांस्टेंट, बट वो डिमांड फॉर Y उसका थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से अभी चीपर गुड्स कौन सा है? एक्स कमोडिटी, क्योंकि एक्स कमोडिटी का प्राइस अभी कम हो चुका है। तो जब उससे उसका इनकम थोड़ा सा हटा लिया जाएगा, उसके पास कम इनकम होगा कंपेयर टू द अर्लियर सिचुएशन। अब वो वापस से उसका देखेगा कि वो एक्स अभी कितना लेगा और वाई कितना, तो वो दोनों ही लेगा 40,000 से, लेकिन अभी एक्स वो ज़्यादा लेगा और वाई कम लेगा। सिंस द प्राइस ऑफ वाई इज स्टिल द सेम एज द अर्लियर सिचुएशन, बट प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी हैज डिक्रीज्ड, सो ही विल डिमांड more of X commodity and less of Y. अब देखो, ये चीज़ है। अब देखो क्या हुआ,
मैं तुम लोगों को ये चीज़ समझाने से पहले एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में एग्जाम्पल क्या होगा, टी और कॉफ़ी, बिकॉज टी और कॉफ़ी आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ substitution. So if price, this is x and this is y, if price of t increases, then demand for tea will decrease, and if demand for tea decreases, then demand for coffee will increase. So देखो, एक कमोडिटी का प्राइस में चेंज होने की वजह से एक का डिमांड डिक्रीज हो रहा है, दूसरे का इंक्रीज हो रहा है, तो इधर भी तो सेम ही हुआ ना, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, as a result demand for x is increased and demand for y is decreased. तो एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज, ऐसा ही होता है सब्स्टिट्यूशन में। अब हम लोगों को ये दिखाना है कि सिर्फ एक्स कमोडिटी नहीं बढ़ेगा, वाई को भी कम करना है, और ये चीज़ दिखाने के लिए उससे थोड़ा पैसा हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ये जब मैंने किया, दिस वॉज द बजट लाइन। अभी उससे जब 50,000 जब इनकम था और प्राइस ऑफ एक्स कम हो गया, तब हम लोग इस बजट लाइन से इधर मूव किए, ठीक है। अब इधर आने के बाद हम लोग थोड़ा सा इनकम उससे ले लेंगे, और इनकम अगर कम होता है तो बजट लाइन शिफ्ट होगा ना लेफ्ट की तरफ। मैंने बोला था इनकम बढ़ने से राइट की तरफ शिफ्ट होता है, और इनकम कम हो जाने से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो पहले इनकम कितना था, 50,000, एंड नाउ इट इज़ 40,000। सो इनकम हैज़ डिक्रीज्ड बाय हाउ मच, बाय 10,000। सो वो जो इनकम डिक्रीज हुआ है, फॉर दैट रीज़न योर बजट लाइन विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। सो इसको इस तरीके से शिफ्ट करना कि ये जगह पे वो टेंजेंट हो। देखो मैंने शिफ्ट भी किया, और पुराना इंडिफरेंस कर्व के साथ वो टेंजेंट भी हुआ है। So at this is the new equilibrium point, and why this budget line? Because now your income has decreased, and if your income decreases, then your budget line will shift leftward like this. So now suppose the budget line is P2L2. So shifting from PL1 to P2L2, why it has decreased leftward? Because your income has decreased. So now the equilibrium point is this, where the consumer is consuming this much amount of good Y and this much amount of good X. So see, the commodity of X, the demand for the commodity X has increased and the demand for commodity Y has decreased. So दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक का डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का डिमांड फॉल कर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़, ये जो 10,000 का इनकम ले लिया गया है, उसको क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिक्स? दिस इज नोन एज कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ये कंपेंसेशन है, उसका इनकम थोड़ा सा जो हमने ले लिया, ये क्या चीज़ का कंपेंसेशन है कि हम लोग इस डायग्राम में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा सकें, तो इसीलिए हम लोगों ने कंपेंसेट किया उसका इनकम में, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस पॉइंट पे अगर जाके हम लोग इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर देते तो इससे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होता, प्राइस इफेक्ट हो जाता। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाने के लिए हम लोगों को एक कमोडिटी का डिमांड अगर ज़्यादा दिखाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, और ये चीज़ दिखाने के लिए मुझे कंज्यूमर से थोड़ा सा इनकम ले लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ये चीज़ नहीं दिखा सकते। Now, shifting from this equilibrium point to this is known as substitution effect. Clear? So, this is price effect, जहाँ पे क्या हुआ, प्राइस चेंज हुआ और दो चीज़ कांस्टेंट है, और किस तरीके से हम लोग शिफ्ट किए ये तुम लोगों को पता है। इनकम इफेक्ट में इनकम चेंज हुआ, बाकी दो प्राइस सेम था, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हुआ, एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ, इस वजह से हम लोग बजट लाइन को चेंज किए। उसके बाद प्राइस ऑफ वाई एंड इनकम आर कांस्टेंट, लेकिन अगर हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना है तो उससे थोड़ा सा इनकम ले लेना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा सकते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव किए, और हम लोगों ने ये भी दिखाया कि एक्स कमोडिटी का प्राइस अगर डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा कमोडिटी का डिमांड डिक्रीज हो रहा है। So these are known as substitution effect. So basically moving from this to this is known as substitution effect. Clear? Now, the best part is now we will combine the three of the diagrams together. So the question will be like this: show that price effect is the combination of income effect and
substitution effect. So how we will show this? See, initially suppose this is our budget line PL1 and this is the indifference curve IC. ठीक है? So this is our equilibrium point where the consumer is consuming this much amount of Y and this much amount of X. तो यहाँ पे हम लोग X के साइड में ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि उसी साइड में हम लोगों को सब कुछ दिखाना है. ठीक है? तो Y को हम लोग थोड़ा देर के लिए इग्नोर करेंगे इस डायग्राम में क्योंकि Y का कोई काम नहीं है इस साइड में डायग्राम में. ठीक है? तो if this is the price line and this is the indifference curve IC1, then this is your equilibrium point E1. Now, suppose if price of X commodity decreases and at the same time price of Y and income remains constant, then what will happen? Your budget line will rotate like this, PL2. ठीक है? Now, if price of X decreases and price of Y and income remaining constant, then demand for X will increase. If demand for X increases, then your satisfaction, पहले जितना तुम X कंजम्पशन करते थे अभी तुम X का कंजम्पशन बढ़ा दिए हो. अभी अगर X तुम ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हो तो उससे क्या होगा? तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा और उससे तुम हायर इंडिफरेंस कर्व में मूव करोगे. तो इस तरीके से हम लोग अपना मूवमेंट करेंगे. सो दिस इज योर अनदर इंडिफरेंस कर्व. सपोज इट इज IC2. So this is the new equilibrium point E2 where the consumer is now consuming this much amount of good X. मैंने क्या बोला? Y कोई साइड को हम लोग इग्नोर करेंगे और क्यों इग्नोर कर रहे हैं वो बाद में तुम लोगों को पता चल जाएगा. So shifting from this point to this, क्यों मूवमेंट हुआ? क्योंकि price of one of the commodity has decreased. So shifting from this to this is known as price effect. So basically shifting from this line to this is known as price effect. Clear? Now, अब मुझे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना है. यहाँ से तो प्राइस इफेक्ट हो गया, अब मुझे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना है. तो मुझे पता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाने के लिए एक कमोडिटी इंक्रीज होने से नहीं होगा, दूसरा कमोडिटी को डिक्रीज होना पड़ेगा. और ये चीज़ दिखाने के लिए कंज्यूमर से मैं इनकम क्या करूँगी? ले लूँगी. तो इससे इसका इनकम क्या होगा? कम हो जाएगा. और इससे इसका इनकम अगर कम हो गया तो अभी हम लोग कौन सा बजट लाइन में है? इस बजट लाइन में. तो अभी अगर इनकम कम हो गया तो बजट लाइन विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड फ्रॉम PL2 to suppose PL3. PL3. ठीक है? So this is the new budget line where the consumer is in equilibrium at this particular point. ठीक है? So where the consumer is consuming this much amount of commodity X. तो अब देखो इस पॉइंट का कोई काम नहीं है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इस पॉइंट से हम लोग इधर मूव तो करते हैं लेकिन यहाँ से हम लोग इधर हम लोगों को आना पड़ता है क्योंकि हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना है. जैसे ये वाला डायग्राम में था, इस पॉइंट से हम लोग इधर मूव किए, इधर कुछ काम नहीं था, फिर हम लोग इधर आ गए. तो शिफ्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस वाज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सिमिलरली इधर से इधर तो हम लोग मूव किए और हम लोगों ने प्राइस इफेक्ट भी इसको बोला. क्यों बोला? क्योंकि हम लोगों को ये तीनों चीज़ एक ही डायग्राम में लाना था. तो इधर से इधर का जो मूवमेंट है वो प्राइस इफेक्ट है, नो डाउट. लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट है वाया दिस इज नोन एज substitution effect. So basically shifting from E1 to E3 via this part is known as substitution effect. Now our new budget line is this now PL3. ये हम लोगों का न्यू बजट लाइन है. अभी कंज्यूमर से जो इनकम हम लोगों ने हटाया था वो सेम इनकम अगर हम लोग उसको वापस से रिटर्न कर दें तो उसका इनकम क्या होगा? बढ़ जाएगा. और इसका इनकम अगर पहले जितना हो गया, पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था अर्लियर इट वाज सपोज 50,000, मैंने 10,000 ले लिया तो 40,000 हो गया. अभी वो 10,000 अगर मैं वापस से इसको दे दूँ तो 10,000 देने के बाद उसका इनकम अब क्या होता है? 50,000. तो उसका इनकम क्या हुआ? बढ़ गया. तो ये अभी हम लोगों का नया बजट लाइन है. तो अभी अगर उसका इनकम बढ़ जाता है तो क्या होगा? आवर इन बजट लाइन विल शिफ्ट अगेन राइटवर्ड. ठीक है? पैसा ले लिया था इसीलिए इधर से इधर आ गए थे, पैसा दे दिया तो इधर से वापस से इधर चले जाएंगे
तो अगर पैसा हम लोग दे देते इसको, तो प्राइस लाइन अगर ये है, देन इट विल अगेन शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम PL3 टू PL2। तो राइटवर्ड अगर मूवमेंट होता है, इस साइड से इधर हम लोग शिफ्ट हो गए, तो हम इस बजट लाइन में हम लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा था, ये। अब नया बजट लाइन में जब हम लोग गए तो उधर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा था, E2। तो अभी देखो, जब बजट लाइन इधर से इधर शिफ्ट होगा, हम लोग कोई सा भी एक और इंडिफरेंस कर्व दिखा सकते थे, लेकिन हम लोग ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को एक ही डायग्राम में ये दिखाना है कि प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसीलिए एक ही बजट लाइन में एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो हम लोगों ने इस बजट लाइन में ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लिया था, so that will remain fixed. So shifting from this to this, why it has shifted? Because now your income has increased. So if your income increases, then your budget line will shift from PL3 to PL2. So shifting from this point to this. अभी इधर क्यों हुआ, क्योंकि देखो इनकम अगर बढ़ गया तो पहले मैं जितना एक्स वाई लेती थी, अभी मैं दोनों चीज़ ज़्यादा लूँगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, एंड आई विल शिफ्ट टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व लाइक दिस। सो बेसिकली शिफ्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस इज नथिंग बट योर इनकम इफेक्ट, सॉरी, क्योंकि इनकम चेंज हो रहा है ना, तो बजट लाइन इधर से इधर मूव किया। सो दिस इज नोन एज income effect. So from this we can write now x(x2) equals to x(x3) plus x3(x2). See, मैंने क्या बोला, देखो x(x2) is equals to x(x3) plus x3(x2). लिख सकते हैं x(x2) equals to x(x3) plus x3(x2) like this. Suppose if this is equals to 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये अगर है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, 3। तो लिख सकते हैं ना 6 इक्वल्स टू 3 प्लस 3। सेम x(x2) इक्वल्स टू x(x3) प्लस x3(x2). सो व्हाट इज x(x2)? x(x2) इज योर प्राइस इफेक्ट। व्हाट इज x(x3)? x(x3) इज आवर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड व्हाट इज x3(x2)? इट इज इनकम इफेक्ट। सो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं ना, दैट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्राइस इफेक्ट इज नथिंग बट द सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस इफेक्ट्स, यू कैन contact me. ठीक है, थैंक यू।